completely we have discussed about renal causes of hypertension. In this class we will try to see first thing, causes of hypertension. We have renal causes. If renal system or if kidneys is impaired, patient will develop hypertension. याद रख लो, सब लोग याद रख लो, अगर किडनी डिसफंक्शन हो गया है, if kidney is not functioning properly, that means patient GFR will be decreased and by that patient will develop hypertension. हर एक kidney injury patients में patient को hypertension is very common clinical presentation. Okay, and in renal causes we have seen RAS mechanism. We have understood about renin, when renin is released, and we have also seen about renin releasing tissue tumors. वो सब causes के वजह से patient को क्या होगा, hypertension होगा. Now the next cause is endocrine cause. Endocrine causes, the first very important cause what we have seen is pheochromocytoma. Actually in yesterday's class I made just a small mistake. See, in kidneys, on the top of kidneys we have adrenal gland. On adrenal gland we have 4 tissues I told. Okay, starting from zona glomerulosa, zona reticulata and zona fasciculata, and the fourth one is adrenal medulla. So these are 4 tissues which are present in adrenal cortex, adrenal gland. So zona देखो GFR, zona glomerulosa releases aldosterone, zona fasciculata releases hydrocortisone and zona reticularis बोलते हैं और reticularis releases androgens. Anyways, एक चीज याद रख लो, all adrenal cortex glands will increase hypertension. Simple. अगर उसके हार्मोन्स ज्यादा हो गए तो क्या होता, it increases blood pressure. Simple. And adrenal medulla releases adrenaline, and adrenaline has direct action on cardiovascular system and it increases hypertension. In yesterday's class we have discussed this. Clear? So अब देखो ये I think you understood about endocrine causes. Pheochromocytoma is nothing but elevated synthesis of adrenaline from adrenal medulla, and Conn's disease is elevated synthesis of aldosterone from zona glomerulosa, and Cushing's disease is elevated synthesis of corticosteroids, glucocorticoids from zona fasciculata, that is Cushing's disease. So these 3 are endocrine factors which will cause hypertension. Are you all following me everybody? Endocrine के अंदर और एक थोड़े diseases भी है. There is a condition called hyperthyroidism. Hyperthyroidism will directly increase the sensitivity of sympathetic system and through that it increases blood pressure. Yesterday I discussed this. And sometimes hypothyroidism also increases blood pressure. And finally there is another concept called acromegaly. Acromegaly is the condition where excess production of growth hormones are produced. So growth hormones also will directly or indirectly, it has many mechanisms, it will also cause elevated blood pressure. These are all endocrine related factors. Clear everybody? ये सब समझ गए? Any doubt in this? ये GFR confused नहीं होना. I confused. GFR confused नहीं होना. Glomerulosa, fasciculata, reticularis. Okay. We will proceed to the next causes. See, next causes we have drugs or drug induced hypertension. This is very important. Everybody should concentrate here. Drugs that causes hypertension. Drugs that causes hypertension. मेरी आवाज बराबर आ रही सब लोगों को? Yes. So in drugs, can anyone tell me the examples of drugs that causes hypertension? Very good. NSAIDs, NSAIDs. Okay, NSAIDs and corticosteroids. Just now we discussed corticosteroids में अपने को mineral corticoids भी आते हैं और glucocorticoids भी आते हैं. Both will increase. Okay, and alcohol. You should not forget alcohol. Alcohol will cause hypertension. And oral contraceptives will cause hypertension. And there are some drugs called monoamino oxidase inhibitors. PB students, have you heard about these drugs, monoamino oxidase inhibitors? For second year वालों को तो ये drugs पता ही नहीं रहता, but PB वाले, have you heard about monoamino oxidase inhibitors? Have you heard about हाँ. Okay, I will discuss about these drugs because these drugs are very important. And some other drugs that can cause
hypertension or amphetamines, and drugs which are directly causing adrenergic agonist, I mean adrenergic agonist बोलते हैं, adrenergic agonist drugs, and sometimes levothyroxine, and we have vasopressin, desmopressin. Okay, even they will increase blood pressure. And there are some drugs called uh, vasoconstrictors, even they increases blood pressure. So these are all, और बहुत सारे drugs हैं, but these are main and commonly used drugs, and commonly used drugs. इसमें से I'll not discuss about all the drugs, but याद रख लो NSAIDs का भी exact mechanism अपने को नहीं है, but they will act on kidneys and through that they'll increase the renin, and by that it increases hypertension. And on blood vessels also they have direct or indirect actions. दो तीन mechanisms है. And corticosteroids, just now we discussed, corticosteroids will cause hypertension. And alcohol is also very important. Initially alcohol will dilate the blood vessels, but later it will constrict the blood vessels, and it has many actions on the liver, and through that also it increases blood pressure. And oral contraceptives, these are hormonal oral contraceptives, estrogens, progesterones, वो उसका action भी direct on the blood vessels and on the cardiovascular system, they will increase blood pressure. And I will try to discuss about monoamino oxidase inhibitors. In monoamino oxidase inhibitors, these are the drugs which will inhibit the enzyme. Monoamino oxidase is the enzyme. Second year wale, family second year wale, everybody concentrate here. There is an enzyme called monoamino oxidase. There is an enzyme in our blood and also in nervous system. It is present in GI tract, it is present in nervous system, it is present in the blood and also in liver. So monoamino oxidase enzyme, very important enzyme. This enzyme has two forms: monoamino oxidase A and monoamino oxidase B. Clear? Everybody should concentrate. Monoamino oxidase is the very important enzyme which is present in our body. It is located in liver, it is located in blood, it is located in GI tract, it is located in brain, it is located in nerves. So this enzyme is located in many tissues. So this enzyme has two isoforms. One is monoamino oxidase A and monoamino oxidase B, right? See, what is the function of monoamino oxidase A? Monoamino oxidase A metabolizes, monoamino oxidase A enzyme metabolizes tyramine. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, tyramine. Have you heard about tyramine? What is tyramine? Tyramine is a basic amino acid. Okay. हाँ, okay, very good. इसके बारे में मैं डिटेल में समझा दूँ आपको. Tyramine, tyrosine, these are amino acids. Okay. So monoamino oxidase enzyme, monoamino oxidase A enzyme metabolizes tyrosine. It metabolizes norepinephrine. What is norepinephrine? Norepinephrine is also called noradrenaline. Okay. Epinephrine is called adrenaline. Norepinephrine means noradrenaline, epinephrine means adrenaline. Always I used to denote as adrenaline and noradrenaline. Adrenaline का दूसरा नाम epinephrine है, noradrenaline का दूसरा नाम norepinephrine है. So monoamino oxidase A is metabolizing or degrading norepinephrine or noradrenaline. Nervous system में noradrenaline release होता ना, that noradrenaline is degraded by this monoamino oxidase enzyme, monoamino oxidase A. Clear everybody? And next, monoamino oxidase A also metabolizes serotonin. Okay, 5-hydroxytryptamine बोलते हैं. Okay, serotonin is also metabolized by monoamino oxidase A. And the third one and the next one is dopamine. So here see, monoamino oxidase A enzyme metabolizes noradrenaline, it metabolizes serotonin, it metabolizes dopamine, and it metabolizes tyramine. Clear everybody? समझ गए सब लोग? अब monoamino oxidase B क्या करता? Monoamino oxidase B, it metabolizes only dopamine, particularly dopamine. And remember one thing: tyramine, serotonin, dopamine. Tyramine, serotonin, dopamine. These three are precursors for. These three are very important in causing vasoconstriction and in causing cardiac functions, and through that they will elevate blood pressure. Simple सी बात ये है, monoamino oxidase A and monoamino oxidase B, ये दो क्या करते हैं? They will metabolize tyramine, noradrenaline,
serotonin, dopamine. A will metabolize these compounds and B will metabolize dopamine. If a patient is taking monoamino oxidase inhibitor, if a person is taking monoamino oxidase inhibitor, there are so many drugs. We have specific monoamino oxidase A inhibitors, we have specific monoamino oxidase B inhibitors, rasagiline, salagiline, both sare, and we have unspecific monoamino oxidase inhibitors. We have unspecific monoamino oxidase inhibitors. Unspecific monoamino oxidase inhibitors, what they do, they will inhibit both the enzymes, and what will happen, what will happen if monoamino oxidase enzyme is inhibited? मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो। नहीं, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो टायरामिन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, because tyramine is degraded by this enzyme. When the enzyme is inhibited, tyramine increases, norepinephrine increases, noradrenaline increases, serotonin increases, dopamine increases. Clear? इसके concentration पूरा बढ़ जाएगा ना। So monoamino oxidase enzyme inhibitors दिए तो that enzyme will be inactivated, and through that these all elements or these all drug compounds, these are neurotransmitters, these all are neurotransmitters which are indirectly or directly they are leading to blood pressure. Actually these all are leading to blood pressure. अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर अभी नहीं है, why because dopamine, serotonin, all these are not elevated, they are not elevated because this enzyme is functioning properly in our body. If these enzymes are inhibited, patient will develop blood pressure. So can we tell that monoamino oxidase inhibitors will cause hypertension? Can we? Yes, I think everybody understood. Now I would like to add one more point here, very important point. Actually monoamino oxidase inhibitors are given in certain mental disorders like depression, okay, depression condition में, sometimes anxiety condition में, and sometimes bipolar. Yes, very good. Parkinson's में भी देते हैं, bipolar disorder में देते हैं, OCD के condition, obsessive compulsive disorder में देते हैं. There are so many uses. We have so many uses of monoamino oxidase inhibitors. इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे. Now one more very important point I would like to add here is monoamino oxidase inhibitors will cause a very dangerous condition called cheese reaction. Cheese reaction. Have you heard about cheese reaction? How many of you heard about cheese reaction? सेकंड ईयर वाले नहीं सुने होंगे, आप सुनते भी नहीं, जब तक हम पढ़ाते आप सुनेंगे नहीं ये चीज़. सुनो अब देखो, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स विल कॉज चीज रिएक्शन. चीज रिएक्शन क्या होता है? सी, if any patient is taking monoamino oxidase inhibitor and along with this monoamino oxidase inhibitor, अगर पेशेंट ज़्यादा चीज़ खा लिया, ज़्यादा चीज़ और the food items which contains lot of tyramine rich foods, simply tyramine rich food अगर पेशेंट ले रहा है along with monoamino oxidase inhibitor, this tyramine is not metabolized in the liver, it will not metabolize in the GI tract and it will not metabolize in the blood. तो क्या होगा? GI tract में actually जो भी tyramine है, tyramine is metabolized by monoamino oxidase enzyme, but we are taking monoamino oxidase inhibitor. तो simply when patient is taking monoamino oxidase inhibitor and along with that when patient takes lot of चीज़ के साथ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर खाया तो टायरामिन रैपिडली बढ़ जाएगा पेशेंट में. रैपिड इंक्रीज ऑफ टायरामिन कॉजेस एंड दैट विल elevate patient's blood pressure and the patient will go to hypertensive crisis. So that reaction is called cheese reaction. How many of you understood this point? cheese reaction समझ गए सब लोग? Very good. चलो, so drugs के अंदर these are all different. And amphetamines are the analogs of noradrenaline only. Actually these are CNS stimulants. Amphetamines or CNS stimulants. Psychotic हो जाते पेशेंट एम्फेटामाइन लिए तो. These are hyperactivating drugs. Patient will have elation, patient will have agitation, patient will have psychosis. Hyperactive हो जाता है पेशेंट एम्फेटामाइन लिए तो. एड्रेनर्जिक ड्रग बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा. Okay, so amphetamines will directly cause blood pressure. They'll directly increase the blood pressure. Through that it will cause hypertension. Simple. Amphetamines के बारे में भी अपन कभी भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट क्या है, ये क्या ड्रग था, आई फॉरगॉट. लेवोथायरॉक्स. या adrenergic agonist. Yes, all adrenergic agonists. Salbutamol, solmetrol, and we have xylometazoline, oxymetazoline. We have systemic drugs. Okay, and vasopressors, desmopressin.
ऑल दिस ड्रग्स विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ड्रग्स के बारे में समझ गए, और इसके अलावा बहुत बहुत सारे ड्रग्स भी है दैट विल इनडायरेक्टली कॉज blood pressure. These drugs are directly inducing hypertension. Okay, so when any hypertensive patient takes these drugs, अगर कोई hypertensive patient ये drugs, ये इसमें से कोई एक drug ले रहा है, तो what we have to do, we have to keep monitoring the patient's hypertension, or we have to increase the anti-hypertensive therapy, because anti-hypertensive therapy fail होने के chances है. Okay, next we have some other miscellaneous causes. Miscellaneous causes में we have so many genetic disorders. उसमें you can take directly take pregnancy. In pregnancy also patient will have hypertension. There is a condition called porphyria. There is a very, very important genetic disorder which is called GBS, Guillain-Barré syndrome. Causes के अंदर what we have, porphyria, Guillain-Barré syndrome, pregnancy, and we have, there is a condition called renal artery stenosis. Actually this will come under renal causes only. I forgot to tell you, renal artery stenosis. I think in yesterday's class I told, I don't remember. ये renal artery stenosis condition क्या होगा? Just imagine this is kidney. The renal artery which is transfusing blood into the kidneys, the artery which is sending the blood into the kidneys, this artery will have congestion. The constriction of this renal artery is called artery stenosis. अगर renal artery stenosis हो गया तो क्या होगा? The blood, very good, the perfusion into the kidneys decreases, and through that GFR decreases. और GFR decrease हो गया तो ultimately क्या होगा? Renin ज़्यादा हो गया, renin will increase, and through that it will increase blood pressure. Yesterday Sudhanshu was telling, yes Sudhanshu, you also told very good answer. I have to appreciate. Whenever GFR falls down, patient will elevate production of renin, and along with that vasopressin also will be released from the hypothalamus of the brain. Okay, that is also very important point. So these are miscellaneous causes, and along with this there is a condition called Gordon syndrome. This is also a genetic disorder. इसके direct mechanism कुछ नहीं है, but on the blood vessels they will cause some stenosis or some disorder, and through that it will elevate the patient's blood pressure. And there is one more genetic disorder which is called Liddle syndrome. Liddle syndrome. Okay, so these are different miscellaneous causes which will increase the patient's blood pressure. सबसे ज़्यादा important renal causes and cardiovascular causes like thrombosis and atherosclerosis, and artery stenosis, and very important one is pheochromocytoma and Addison's disease. Okay, so they are very, very important causes for hypertension, secondary causes for hypertension. Yes, Addison's disease will cause hypertension. Sorry, not Addison's. Yes, very good. Yes, Cushing's will cause, not Addison's. Cushing's disease will cause. Yes, I confused. Addison's disease will never cause hypertension. Very good. अरे मेरे को क्या हो रहा जी? I was confusing. I'm not understanding what's happening. Yesterday only I told you Addison's disease will never cause hypertension. Okay, ये बात याद रख लो, very, very important point. ऐसे confuse होते हैं, इसलिए I focused on this point. Anyways, so these are different causes for hypertension. अब और एक थोड़े ट्रीटमेंट के पास जाएंगे. ओके, these are different causes. ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी कल देख चुके हैं. एंकिल ब्रैकेट इंडेक्स भी अपने को पता चल गया क्या है. ओके, which will explain particularly the dysfunction of arteries or stenosis in the blood vessels. And silastazole के बारे में कुछ बोले थे, कुछ याद है आपको? What is the function of silastazole? Anybody फटाफट रिवाइज करो. Silastazole क्या करेगा? Silastazole is a phosphodiesterase 3 inhibitor, and by inhibiting, very good, exactly, it is very important. It is drug of choice, single very effective drug for pseudo hypertension or hypertension which is caused due to the blood vessel disorder. Okay, Silastazole. इसके साथ साथ अपने को बहुत सारे vasodilators भी है. Hydralazine, minoxidil, बहुत सारे drugs we have. We will discuss about drugs in detail, but among all these vasodilators, Silastazole is very, very important and very effective drug for pseudo hypertension. Yesterday we have seen. Okay, other causes also अपन आज already देख लिए.
अब ट्रीटमेंट के पास जाएंगे. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे. in in antihypertensive drugs, in antihypertensive drugs, so we have these many drugs. See, first very very important point, antihypertensive drugs में सुनो, hypertension आने के mechanisms what we have, there are three direct mechanisms which will cause hypertension. Number one, सब लोग ध्यान देना यहाँ पे. Number one, cardiac output. Number one, cardiac output. Number two, blood volume, and number three, vasoconstriction or blood vessel, vasoconstriction or blood vessel disorder. Simply बोल सकते हैं vasoconstriction. So these are three very very important factors which will increase blood pressure. See, to understand these 3 points, I would like to tell one more basic point. What is blood pressure? Yesterday we have seen elevated blood pressure is called hypertension. Persistent or prolonged elevated blood pressure is called hypertension. अपन देखें, that is hypertension definition. Now what is blood pressure? हाँ, जो भी pressure, the fluid pressure on the blood vessels or the pressure exerted by the volume of the blood on the blood vessels is blood pressure. Simply उसका exact definition भी नहीं बोल सकते. The blood pressure which is exerted by the contraction of cardiac myocytes, through that the fluid will produce certain pressure on the walls of the blood vessels, ऐसा करके बोल सकते हैं अपन. But simply to understand theoretically, blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. Cardiac output into peripheral resistance क्यों होगा? जब भी blood vessel constriction होगा. Actually the third factor is peripheral resistance. Peripheral resistance क्या है? The opposing force, for example this is blood vessel, सब लोग ध्यान देना, this is blood vessel. Just imagine blood is flowing in this direction. अगर blood vessel के अंदर कुछ obstruction आ गया तो क्या होगा? opposing force ज़्यादा होगा ना ये blood के अंदर, ये pressure के अंदर, I mean in the direction where blood is flowing, opposing force will increase. So when opposing force increases, that will increase blood pressure. Simply that will increase the blood pressure. The opposing force is nothing but peripheral resistance. Opposing force कब ज़्यादा होगा? If blood vessel is constricted, or if blood vessel is obstructed, or if blood vessel is having plaque formation, or if blood vessel is having clot formation, जो भी है, तो उस टाइम पे पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. अगर पेशेंट में पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. सुनो, blood pressure is nothing but cardiac output into peripheral resistance. So blood pressure is directly proportional to cardiac output and also peripheral resistance. Clear? Blood pressure is directly proportional to cardiac output and peripheral resistance. Cardiac output बढ़ गया तो blood pressure बढ़ जाएगा, peripheral resistance बढ़ गया तो भी blood pressure बढ़ जाएगा. So blood pressure simply define करने के लिए it is the product of cardiac output and peripheral resistance. Clear? अब देखो, what is cardiac output? Stroke volume, the stroke volume into heart rate. Stroke volume into heart rate. Stroke volume is nothing but the amount of fluid which is coming out of the heart for one beat or one contraction of ventricle. उसको अपन stroke volume बोलते हैं. Heart rate क्या बोलते हैं? Number of beats per 1 minute. 1 मिनट के अंदर जितना भी stroke volume आ रहा उसको अपन cardiac output बोलते हैं. Simple. The amount of blood which is coming out of the heart for 1 minute is cardiac output. Clear? अब देखो, stroke volume बढ़ने से या हार्ट रेट बढ़ने से, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा, तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. क्लियर? इफ पेशेंट्स हार्ट रेट इंक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. if patient's cardiac output increases, blood pressure increases, and blood pressure is directly proportional to cardiac output and peripheral resistance. This basic thing we understood, right? blood pressure कैसा डिफाइन कर सकते हैं? वन इज कार्डियक आउटपुट, नंबर टू इज पेरिफेरल रेसिस्टेंस, एंड नंबर थ्री इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड. अब देखो, अब वी विल ट्राई टू सी द ड्रग्स. जो भी साइंटिस्ट ड्रग डिस्कवरी करता है, द पर्सन और द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स द ड्रग, he will try to show the action on these mechanisms only. Either the drug is acting on cardiac output, or if the drug is acting on blood volume, or if the drug is acting on peripheral resistance. देखो, there are some certain drugs called beta blockers. Beta blockers will decrease heart rate. Here see, beta blockers will decrease heart rate,
and through that it will decrease cardiac output. Now if cardiac output is decreased, we can decrease blood pressure, right? Cardiac output कम होगा तो BP कम हो जाएगा. So beta blockers, can we go with beta blockers in hypertension? Yes. So beta blockers are the drugs which are acting on decreasing heart rate. This is one strategy. Next one is ACE inhibitors. In yesterday's class I told there is see, here we have angiotensin 1. Angiotensin 1 is converting into angiotensin 2. Angiotensin 2 has many actions which will increase blood pressure. Simple. Angiotensin 2 will increase blood pressure. Yesterday I told. So the angiotensin 1 is converting into angiotensin 2 by a very important enzyme which is called ACE, ACE. अगर अपन ACE inhibitor दे के ये enzyme inhibit कर दिए तो what will happen? 1 will not be converted into 2 and through that we can decrease patient's blood pressure. This is second strategy. Are you all following me, everybody? अब देखो नंबर 3, थर्ड ड्रग इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ARB बोलते हैं इसको, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs बोलते हैं सिंपली. एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेगा? देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 अपने बॉडी में, एंजियोटेंसिन 2 विल गो एंड फॉल ऑन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, ऑन ब्लड वेजल्स, ऑन ब्रेन एंड ऑल डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, ऑन किडनीज. Wherever angiotensin 2 receptor is present, it will act on those receptors and through activating angiotensin 2 receptors, it will increase blood pressure, which will cause hypertension. अपन डायरेक्टली ए एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं या वी कैन इनहिबिट दी रिसेप्टर्स आल्सो. रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दिए तो क्या होगा? द एंजियोटेंसिन 2 विच इज एक्टिवेटेड विल नॉट शो इट्स एक्शन ऑन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स. सो दिस इज थर्ड स्ट्रेटेजी. थर्ड स्ट्रेटेजी समझ गए सब लोग? नाउ understood everybody? You didn't understand angiotensin receptor blockers? How many of you didn't understand? कोई है angiotensin 2 receptor blockers कैसा एक्ट करता? Yes or no? कोई बोलो हाँ. Very good. चलो हाँ yes. ऐसा बोलो, I will tell you. See, I will give you more clarity. सब लोग ध्यान दो, सेकेंड ईयर वाले स्पेशली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में. अपने को ऑलरेडी पता है, दिस इज किडनी विल रिलीज रेनिन. Okay, this renin goes and converts angiotensinogen from liver. लिवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन है. दिस रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 and this angiotensin 1 goes to lungs. It goes to lungs and in lungs we have one enzyme which is called ACE. This ACE converts angiotensin 1 into 2. Till here we are very clear. Okay, now you see when angiotensin 2 is activated, this is very powerful. This is very powerful element in the body. It is very powerful compound in the body. So this angiotensin 2, what it does, this angiotensin 2 will try to find out where is its receptor located. angiotensin 2 के receptor कहाँ है ढूंढेगा. अगर जहां भी angiotensin 2 receptor मिल जाएगा ना, तो उसके ऊपर जाके बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी दिखाएगा. तो देखो अब angiotensin 2 के रिसेप्टर्स फर्स्ट ब्रेन में रहेगा. angiotensin 2 receptor is present in brain. angiotensin 2 receptor is present on heart. angiotensin 2 receptor is present on blood vessels. angiotensin 2 receptor is present on kidneys. समझ गए सब लोग ये बात? अब देखो, this angiotensin 2 powerful compound, it comes and binds on the brain because in the brain it has its receptor, angiotensin 2 receptor. When this angiotensin 2 binds on this angiotensin 2 receptor in the brain, it activates release of noradrenaline or it activates sympathetic system. angiotensin 2 brain के ऊपर क्या एक्शन दिखाएगा? Release of noradrenaline. Clear this point everybody? Now number 2, angiotensin 2 receptor is present in heart also. This angiotensin 2 receptor, this angiotensin 2 compound comes and binds on the receptor in the heart and through that it increases heart rate. Heart rate बढ़ गया तो क्या होगा? Simply it will increase cardiac output and through that it will increase blood pressure. Clear? And number 3, this angiotensin 2 receptors are also present on blood vessels. It falls on this receptor. It will cause vasoconstriction. It will cause vasoconstriction and this will further increase blood pressure. It will increase blood pressure. And in the kidneys, this angiotensin 2 releases renin and also releases aldosterone. तो रेनिन एक्शन फिर से रैस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, फिर से कंटिन्यू होगा.
or it also releases aldosterone, and aldosterone will increase sodium water reabsorption and it will again increase blood pressure, again increase blood pressure. तो देखो, angiotensin 2 is a powerful hypertensive agent. Do you agree with my statement? Yes. If we inhibit the receptors, angiotensin 2 receptors in the brain, in the heart, in the blood vessels and in the kidneys by giving ARB, by giving ARBs. ARBs means the drugs which will inhibit the angiotensin 2 receptors. That is the third strategy. Exactly. टेलमिसार्टान, वालसार्टान, टेल्मा फाटी करके आता, टेलमिसार्टान 40 mg, वेरी वेरी कॉमनली. इसके बारे में मैं एग्जाम्पल सब डिटेल में समझाता हूँ आपको. फर्स्ट आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, डिफरेंट ड्रग्स क्लासेस क्या है, वो सब देखेंगे पहले. these three strategies you understood. So these ACE inhibitors are decreasing cardiac output, they are decreasing peripheral resistance, and through that they are decreasing blood pressure. In the same way, angiotensin 2 receptor blockers also, they are decreasing cardiac output, decreasing peripheral resistance, and decreasing blood pressure. ACE inhibitors and ARBs both are having very similar action. Both are having same action. एक्शन सेम है बट मैकेनिज्म डिफरेंट है. ये क्या कर रहा, एस एंजाइम को इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट नहीं कर रहा, एंड दिस वन इज इनहिबिटिंग द रिसेप्टर, एंड थ्रू दैट इट इज स्टॉपिंग द एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2. नाउ the next strategy is we have calcium channel blockers. Actually calcium channel blockers has two types of calcium channel blockers. Actually we have calcium channels in the heart, we have calcium channels in the heart, and we also have calcium channels in the blood vessels. एक चीज याद रख लो सब लोग, अगर कैल्शियम आयन सेल के अंदर एंटर हुआ तो what it does, it will cause depolarization and it will cause force of contraction and it will increase the contraction of particular muscle. depolarization करके contraction करेगा. अगर अपन ये कैल्शियम चैनल्स को, फॉर एग्जांपल जस्ट दिस इज वन सेल ऑफ कार्डियक मायोसाइट और स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल व्हाटएवर, उसके ऊपर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिए, कैल्शियम चैनल को क्लोज कर दिए, तो कैल्शियम चैनल अंदर एंटर नहीं होगा एंड डीपोलराइजेशन नहीं होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा. तो अगर हार्ट के ऊपर इफ वी ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स ऑन द हार्ट, व्हाट विल हैपन, हार्ट रेट डिक्रीजेस, हार्ट रेट डिक्रीजेस. And if we block the calcium channels on the blood vessels, vasoconstriction decreases and it will cause vasodilation. So through this mechanism, so this is the fourth strategy, calcium channel blockers also decreases blood pressure. Because of that reason calcium channel blockers are effective antihypertensive drugs. समझ गए. एक्चुअली यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, कैल्शियम चैनल्स हार्ट के ऊपर है और ब्लड वेसल के ऊपर है. We have two types of calcium channel blockers. The calcium channel blockers which blocks on the heart, which are called non-dihydropyridines, and the calcium channel blockers which blocks on the blood vessels, they are called dihydropyridines. About calcium channel blockers I'll explain you in detail, don't worry. इसके बारे में डिटेल में जब समझाते टाइम पे I'll tell you. So this is fourth strategy, and next strategy is diuretics. अब देखो, I told three mechanisms. First mechanism cardiac output, second mechanism blood volume, third mechanism is peripheral resistance. ये तीन mechanism के वजह से ही पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. तो डायूरेटिक क्या कर रहा, what diuretics does in last class I explained you what diuretic does. हाँ, simply diuretics will decrease the blood volume. Simple point, direct point बोलना, diuretics will decrease blood volume here. ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, ओवरलोड कम हो जाएगा और पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा. यस, एक्चुअली अपने को डायूरेटिक्स में वी हैव सो मेनी टाइप्स. वी हैव ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, वी हैव थायराइड डायूरेटिक्स, वी हैव लूप डायूरेटिक्स, वी हैव कार्बनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक्स. ओके, बहुत सारे डायूरेटिक्स के टाइप्स है. वी हैव पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बोलते हैं. ये सब डिटेल में पढ़ेंगे अपन. ओके, along with the mechanisms. Yes. When blood volume is decreased, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज. सिंपल, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ओवरलोड कम हो जाएगा ना. सी, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया. ये तीन मैकेनिज्म्स को कम करने के लिए ही वी आर गिविंग ऑल दिस ड्रग्स, ऑल दिस स्ट्रेटेजीज. बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहा, कार्डियक आउटपुट कम कर रहा. एसी इनहिबिटर्स क्या कर रहा, कार्डियक आउटपुट के साथ साथ पेरिफेरल रेसिस्टेंस भी कम कर रहा. बोथ एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीस. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आल्सो डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड
they are decreasing peripheral resistance. But diuretics are the drugs which will decrease the blood volume. ब्लड वॉल्यूम कम करके ब्लड के अंदर जो भी ओवरलोड था, ओवरलोड मीन्स एक्सेस वाटर इज विल कॉज ब्लड प्रेशर, नो. सो वी आर डिक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर. यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसका मीनिंग क्या है? ब्लड के अंदर जो भी पानी था पूरा निकल के चले गया. सिंपल. यूरिन प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम ब्लड ओनली. यूरिन इज नथिंग बट ब्लड ओनली. ओके. सो व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय गिविंग डायरेटिक्स से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर? Now next strategy is we have vasodilators. Peripheral resistance क्यों होगा? Peripheral resistance के वजह से blood volume बढ़ जाता है. That we already seen. So see, peripheral resistance कब ज़्यादा होगा? Anybody? Peripheral resistance कब ज़्यादा होगा? Peripheral resistance, हाँ, whenever, simple. If blood vessel blood vessel lumen size decreases, ये blood vessel का lumen size जब भी कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा? Peripheral resistance बढ़ जाएगा. Peripheral resistance is nothing but opposing pressure. The lumen size, अगर lumen size means the space between the walls of the blood vessel. हाँ, अगर blood vessel constriction हो गया तो lumen size कम हो जाएगा. Lumen size of the blood vessel decreases when it has vasoconstriction or when it has plaque formation or when it has thrombus formation, whatever the reason is. So what vasodilators does? Vasodilators will dilate the blood vessel by causing smooth muscle relaxation. ये जो blood vessel के अंदर smooth muscles रहते हैं ना, yesterday I told we have three layers here. See, so these are smooth muscles. ये जो tunica, ये जो है ना tunica intima and tunica media के अंदर ये जो we have, these are smooth muscles. So these smooth muscles are relaxed. When smooth muscle relaxes, it will cause vasodilation. When vasodilation occurs, what will happen? The lumen size will increase. When lumen size increase, more fluid will be increased, and through that pressure decreases. Lumen size जब बढ़ेगा तो ये वाल्स के ऊपर जो प्रेशर इससे पहले था, that pressure will be decreased. Clear? So vasodilators are the drugs which will decrease the peripheral resistance. Through that it will decrease blood pressure. So vasodilators are another strategies for hypertension. And next we have beta blockers. यहाँ पे beta blockers कहाँ है? Beta blockers already यहाँ पे बोल दिए. Next is alpha blockers. Alpha blockers इसके बारे में भी मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको. Actually what happens when alpha receptors will be activated, they will directly or indirectly they will cause increased cardiac output and they'll cause vasoconstriction. थ्रू दैट दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और वासोडाइलेशन हो जाएगा. थ्रू दैट आल्सो वी कैन डिक्रीज पेशेंट्स ब्लड प्रेशर. सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच आर अवेलेबल एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. इसके साथ साथ वी हैव सम सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स के बाद और थोड़े नए ड्रग्स है, न्यूअर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. एबो हाँ, अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में आपको समझ में कब आएगा? जब अल्फा रिसेप्टर्स के बारे में बताते हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा. आई डिडंट एक्सप्लेन अबाउट दिस. इसके बारे में अभी आपको कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है. बीटा ब्लॉकर्स कैसा कम करेगा? डू यू नो हाउ बीटा ब्लॉकर्स विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर? डू यू नो द मैकेनिज्म एग्जैक्टली? यू डोंट नो. आई विल एक्सप्लेन नाउ, डोंट वरी. अल्फा ब्लॉकर्स भी सेम. एक चीज यहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ आइडिया. अल्फा रिसेप्टर्स विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वासोकंस्ट्रिक्शन. When alpha receptors are blocked, vasoconstriction will be decreased and it will decrease blood pressure. Simple. अब अपन एक के बारे में मेकानिज्म के साथ, ड्रग इंटरैक्शन के साथ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे. इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में कोई भी कुछ भी पूछो, परफेक्ट रहना. एक दिन में नहीं आएगा ये सब. यू कांट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स इन सिंगल डे. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग. ओके, नाउ वी विल गो विद बीटा ब्लॉकर्स. ये लेक्चर में बीटा ब्लॉकर्स एक खत्म करने के लिए बहुत टाइम चाहिए अपने को, बिकॉज इट इज़ ए लेंथी टॉपिक. क्लियर? नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट बीटा ब्लॉकर्स. In yesterday's class, I told you that in hypertension we have two types. One is primary and one is secondary. Right? अगर कोई patient, if any patient with the age of more than 50, if any patient with the age of more than 50 comes to the hospital
And if this patient has hypertension for the first time, if this patient is diagnosed with hypertension for the first time in 50 years, at 50 years, such patients should be considered as secondary hypertensive. Secondary hypertensive, that means उसका मीनिंग क्या है? These hypertension, exactly. So when patient has 50 years of age, and in these 50 years if patient develops hypertension, we have to assume that patient developed hypertension due to or secondary to some other cause. Secondary to some other cause. Okay, this is one important point you have to remember. Number two, if any patient is having hypertension with the age of less than 50, 50 के पहले अगर किसी पेशेंट को in young age, in 20 years, in 25 years, in that cases if patient has hypertension, we should think that they are having primary hypertension, which is also called idiopathic hypertension. This is second important point you have to remember. अब देखो 50 years के बाद, 50-55 years के बाद, if patient has hypertension, we are thinking that patient is having secondary hypertension and patient is having some other disease condition. So in this case, immediately we have to start some other tests. We have to try to find out the exact reason for the patient's blood pressure. So what we have to rule out here? Immediately we have to perform patient's CBP, complete blood picture. Okay, अगर कोई 50 years का पेशेंट, 50-55 years का पेशेंट अपने पास हाइपरटेंशन से आया पहले बार, तो immediately we have to start performing all these tests. Which one? Number one, we have to perform CBC or CBP, complete blood picture. We have to perform patient's lipid profile. We have to perform patient's lipid profile. We have to perform patient's डायबिटीज स्टेटस. यहाँ पे डायबिटीज देखने के लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं अपन? व्हाट विल बी we can perform RBS, we can perform PVBS देख सकते. We can perform patients HbA1c, we can perform patients fasting FBS. Did I explain all these things in diabetes? ये सब चीज़ें छोड़ दिए अपन. I didn't explain you. अरे these all things will come in diagnosis. In type 2 diabetes we have not discussed, right? Why we skipped that? I don't know. क्यों skip कर दिए that type 2 diabetes? Anyways, चलो चलो no. Yeah. Yes, I remember. Okay. After finishing hypertension, we'll go with diabetes. Anyways, see, in 50 years, if any patient comes, we have to perform patient's complete blood count. We have to perform patient's lipid profile, diabetes status. फटाफट पेशेंट को RBS चेक करना. ये भी अगर सुबह में आया विदाउट हैविंग फूड, तो वी हैव टू परफॉर्म पेशेंट्स FBS एंड HbA1c भी दे दिए तो पता चल जाता कि लास्ट 3 महीने से पहले पेशेंट का एवरेज वैल्यू कितना था. दैट आल्सो वी विल अंडरस्टैंड. एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू परफॉर्म पेशेंट्स ECG. पेशेंट्स ECG प्रोफाइल भी देखना. ECG कैसा है देखना. And sometimes we have to perform patients cardiac markers also. Cardiac markers. Okay. और क्या देख सकते हैं पेशेंट के? डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल, CBP, एंड यस, वेरी गुड रीनल फंक्शन. वी हैव टू परफॉर्म पेशेंट्स रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT. सीरम क्रिएटिन, पर्टिकुलरली सीरम क्रिएटिन एंड सीरम यूरिया. और पेशेंट को अपन डायरेक्टली यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं. वही वी हैव टू परफॉर्म यूरिन टेस्ट. ये इसका सबका एक रीजन है. आई टेल यू वाई वी हैव टू परफॉर्म ऑल दिस. सिंपल यूरिन टेस्ट करने से अपने को पता चल जाता कि इफ पेशेंट इज हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलर सिंड्रोम और एनीथिंग, प्रोटीनूरिया वगैरह कुछ है तो पता चल जाता. अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो भी शुगर विल बी seen in the urine. Even that also we can understand that patient is having a underlying cause. So underlying cause देखने के लिए complete blood count देखते. इसमें हमें अनीमिया वगैरह कुछ है तो पता चल जाता. एंड इन लिपिड प्रोफाइल ऑल ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL सब पता चल जाता. बिकॉज ऑफ दिस लिपिड प्रोफाइल विल अंडरस्टैंड वेदर पेशेंट इज हैविंग atherosclerosis or yes. And diabetes is very important. Diabetes also, see, बहुत सारे patients, most diabetic patients will have hypertension, but exactly there is no exact reason diabetes के वजह से कैसा hypertension आएगा. We don't have the exact mechanism, but some scientists and some doctors, what they feel is diabetes will cause non-enzymatic glycosylation in the blood vessels,
and through that blood vessel vasoconstriction occurs and through that it causes blood pressure, ऐसा करके थोड़े बोलते, बट उसका उतना रिलेशन नहीं है. अब diabetic patients are always having hypertension, so these both diseases are seen commonly, very commonly. तो अपन अगर कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले आते आते हाइपरटेंशन आया, तो वी हैव टू चेक वेदर इट्स फ्रेंड, हाइपरटेंशन का फ्रेंड कौन है, डायबिटीज है या नहीं, चेक कर लेना. ओके, एंड ईसीजी चेक करना. ईसीजी विल टेल अस हार्ट रेट एंड ऑल इफ एनी पेशेंट हैज coronary artery disease or any congestive heart related disorder or anything. Okay, and cardiac markers भी उसमें देख लेते. cardiac markers will tell the cardiovascular function. and renal function test में serum creatinine and serum urea. serum creatinine बढ़ गया तो it tells about renal impairment or kidney impairment. kidney impairment patient में तो blood pressure होगा ही होगा. So to find out the underlying cause of the hypertensive patient who comes for the first time with the age of 50 or 55, we have to check all these things. दिस पॉइंट क्लियर एवरीबडी. और इसके साथ साथ अपन पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल भी देखना. थायराइड प्रोफाइल इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज थायराइड प्रोफाइल आल्सो विल कॉज हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने के लिए करते ये सब. इफ सेकेंडरी इफ अंडरलाइंग कॉज इज स्पेसिफाइड, if we treat the underlying cause, ultimately the blood pressure also can be decreased. समझ गए सब लोग? समझ गए ये चीज? अब देखो एक एमटी सी. Before understanding about beta blockers, before understanding about pharmacotherapy, one more point I would like to finish here. We have non-pharmacotherapy. Diabetes और hypertension में non-drug therapy plays very 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 important role. Let me repeat the point. Non-pharmacotherapy is very 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 important intervention to treat hypertension. And in non-pharmacotherapy, what we have to do? First, very very important counseling point and important intervention is we should advise the patient to decrease weight. Yes, हाँ, वो सब भी है. First very very important is to reduce weight. Some researchers what they tell, some research articles what they are telling, for every 1 kg of weight reduction, patient's blood pressure with 0.5 to 1 mmHg will be decreased. अगर पेशेंट का बॉडी वेट 5 kgs कम हो गया एंड पेशेंट्स ब्लड प्रेशर वाज 160, 5 किलो कम होने से पेशेंट को विदाउट ड्रग्स वी कैन डिक्रीज 5 mm per hg. सो वी कैन मेक इट 155. समझ रहे आप लोग? सो वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट non-pharmacotherapy intervention in treating hypertension. Every 1 kg of weight reduction decreases the blood pressure with 0.5 to 1 mmHg of blood pressure. Number two, we have to advise the patient to restrict salt, means sodium. We have to restrict sodium. We have to advise to restrict fat diet, heavy fat diet, and we have to advise the patient to take more fiber. We have to advise to take more fiber diet. And we should advise the patient to take potassium rich foods, because good potassium levels will try to maintain the blood pressure. Some researchers are telling this also. और क्या है? If any other, we have to advise. Very good, excellent. This is very important. We have to advise to stop alcohol consumption. Agar patient is having alcohol consumption, we have to advise to stop smoking. Smoking and alcohol both are very important. Okay, and any other मेरे को याद नहीं है. Stress, okay, stress. स्लीप अपने वेरी गुड. इंसोम्निया कंडीशन में भी अगर पेशेंट को स्लीप बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट विल हैव एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. बहुत सारे, नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, there are so many disease conditions can be seen if patient doesn't take proper sleep. इंसोम्निया बोलते हैं उसको. इंसोम्निया कंडीशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो और कुछ याद है तो विल डिस्कस लेटर. सो दिस आर डिफरेंट नॉन फार्माकोथेरेपी इंटरवेंशंस विच आर इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज पेशेंट्स ब्लड प्रेशर. ओके, नाउ विल गो टू बीटा ब्लॉकर्स. ये क्लासिफिकेशन सब लोग अभी याद कर लो. आई विल गिव यू 1 minute टाइम. इन बीटा ब्लॉकर्स वी हैव 3 generations, first, second and third.
first generation first generation beta blockers are mostly non-selective. Second generation beta blockers are particularly beta 1 selective, and third generation are having beta blocking activity along with vasodilatory activity. So in first generation we have propranolol, timolol, nadolol, pindolol, sotalol. इसके साथ और थोड़े न्यू ड्रग्स भी है, some drugs are not added here. Okay. और बीटा 1 सेलेक्टिव में एटेनलॉल, एसिबिटोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल. मेटाप्रोलॉल आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग. एंड एटेनलॉल आल्सो, बट मेटाप्रोलॉल इज मोर कॉमनली यूज्ड. दिट इज बीटा 1 सेलेक्टिव, याद रख लो. मेटाप्रोलॉल इज बीटा 1 सेलेक्टिव. इसके बारे में अभी आई टेल यू. एंड थर्ड जनरेशन में वी हैव लाबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल एंड सेलिप्रोलॉल. एक्चुअली दिस थर्ड जनरेशन ड्रग्स, ड्यू टू देयर एडिशनल vasodilatory action, they are used in emergency conditions, emergency hypertensive conditions, and wherever rapid action is required. And they are available in IV form, they are available in oral form, and their onset of action is also very fast. So because of this reason, these drugs are very commonly used in emergency conditions. Okay. ये ड्रग्स के नाम बाद में भी आप याद कर सकते हैं. Now before understanding the mechanism, one basic point I would like to add. I want one empty slide. देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. Very very important slide, important topic this is. See, in beta receptors we have beta 1, we have beta 2 and beta 3. Clear? अपने पास 3 receptors है. Beta 1 receptor is present in 2 tissues. Number 1 present on heart, number 2 present on kidneys. When beta 1 activates, it will increase all stimulatory actions of heart rate बढ़ा देगा, force of contraction बढ़ा देगा और cardiac output बढ़ा देगा, and through that it will increase blood pressure. And second, beta 1 receptor is present in kidneys, it will increase release of renin. रेनिन रिलीज हुआ तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया. मैकेनिज्म पूरे समझ गए अपन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. व्हेन रेनिन इज रिलीज, इट विल कॉज ब्लड प्रेशर. beta 1 is present in heart, kidneys. Both when beta 1 is activated, I am telling all the points about activation. Now see, beta 2 is present on liver, beta 2 present on lungs. Very very important. Beta 2 present on lungs. Beta 2 is present in uterus. Beta 2 is present on urinary bladder. Or beta 2 is present on all the cells. Beta 2 is present on all the cells. हर एक सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता. Okay. And any other tissue, if I forget any other tissue. One is, it is present on liver, second is on lungs, third is on all cells, fourth is on uterus, urinary bladder, and beta 2 sometimes they are present on blood vessels also. Not mainly, but they are present on blood vessels. Okay. And finally the third beta 3 receptor is present on adipose tissues. Okay. अब देखो बीटा 1 एक्टिवेट होने से क्या हो रहा? हाइपरटेंशन हो रहा. यस. अब देखो बीटा 2 रिसेप्टर लिवर के ऊपर एक्टिवेट होने से, when beta 2 receptor activates on the liver, it causes glycogen lysis and it increases glucose levels. Simple point, you remember. Actually beta 2 activation is causing hyperglycemia. Beta 2 activation is causing hyperglycemia on liver. Okay. And number 2, beta 2 activation on lungs, it causes bronchodilation. ध्यान दो, डाइलेशन. बीटा 2 एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा? ब्रांकोडाइलेशन होगा. क्लियर? एंड व्हेन बीटा 2 is acting on the cells, it will mediate the entry of potassium into the cells. When beta 2 activates on each cell हर एक टिश्यू के ऊपर रहता potassium channel, and on that we have beta 2 receptors. Okay. And next, on the uterus, if beta 2 receptor is activated, it will cause relaxation of uterus. What it will cause? It will cause relaxation of uterus. And on the urinary bladder, same.
On the urinary bladder also it causes relaxation of urinary bladder. बीटा टू रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो यूट्रस के ऊपर क्या होगा, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा. एंड हियर यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड. यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड इन relaxation of urinary bladder muscles. And when uterus muscles are relaxed, what will happen? Uterus muscles, abortion नहीं होगा. abortion कब होगा? जब when uterus muscles contracts. When uterus muscle contracts, it will cause abortion. Here it is not causing abortion, it will delay the abortion. अगर किसी पेशेंट को abortion होने के chances है तो बीटा 2 agonist देना अपन. Okay, that will delay the abortion, or it will delay the ejection of the fetus. Now on the blood vessels it will cause vasoconstriction. Simple vasoconstriction. एक्चुअली ये यूट्रस के, यूरिनरी ब्लैडर के, लंग्स के, ये हाइपरटेंसिव के एक्शंस कुछ भी नहीं है. बीटा 2 के कुछ भी हाइपरटेंसिव के एक्शन नहीं है. ओनली ऑन द ब्लड वेसल इट विल कॉज हाइपरटेंशन. मेन हाइपरटेंशन रिड्यूस करने के लिए अपने को बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है. बीटा 1 एक्टिवेट होने से क्या हो रहा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा ना. बीटा 2 के ब्लड प्रेशर के ऊपर एक्शन किसी का नहीं है एक्सेप्ट ऑन ब्लड वेसल. सो वी डोंट वांट टू ब्लॉक बीटा 2, वी वांट टू ब्लॉक बीटा 1, because through beta 1 action only it is causing hypertension. If we stop beta 1 receptor action, then we can decrease the patient's blood pressure simply. Okay, you understood. Now beta 3 is present in adipose tissue, and on adipose tissue upon activating beta 3 receptors it will cause lipolysis, breakdown of lipids. Simple. Now see, in beta blockers what we have, first generation one they are blocking both beta 1 and beta 2. And beta 1, particularly these drugs, second generation drugs are selective on beta 1. So these beta 1 selective drugs will act on heart, and they'll act on kidneys. And through that what they'll do, they will decrease the cardiac output by acting on beta blocking action in the heart, and by blocking beta 1 action on the kidneys they'll reduce renin. Through these both mechanisms they are effective antihypertensive drugs. Clear? तो these are beta 1, and ये beta 1 beta 2 के साथ साथ vasodilatory action रहेगा. Because of that they are used in emergency condition. Now you see, everybody should concentrate here. A classification is not important. Now you see, if one of your Prajwal is decided to go with beta blocker, Prajwal decided to go with beta blocker to one of his hypertensive patient. प्रज्वल के पास एक हाइपरटेंसिव पेशेंट आया and he decided to go with beta blocker. If anyone decides to go with beta blocker, what important points we have to consider? That is very very important. अगर आप बीटा ब्लॉकर देने जा रहे हैं तो आप क्या पॉइंट्स माइंड में रखना? फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू cardiovascular, due to heart factor mainly. See, I told 3 factors for causing hypertension. Number 1 is increasing cardiac output. Okay, number 2 is blood volume, number 3 is peripheral resistance. Okay, cardiac output कब बढ़ेगा? जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा. किसी पेशेंट में हार्ट रेट बढ़ रहा है क्या देखना, किसी पेशेंट में हार्ट रेट बढ़ रहा है क्या चेक करना. अगर कोई पेशेंट में हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, थ्रू दैट पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन, देन फर्स्ट लाइन ड्रग व्हाट वी हैव टू चूज इज बीटा ब्लॉकर. नंबर 2, दिस इज फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू कंसिडर. नंबर 2, if any patient is having coronary artery disease, beta blocker is to be chosen. And if any patient is having hyperthyroidism, beta blocker should be advised. How many of you understood this point? बीटा ब्लॉकर कब देना चाहिए? बीटा ब्लॉकर कब देना चाहिए? सुनो, if patient's heart rate is elevated through which blood pressure is increasing, that is 1. If patient is having coronary artery disease, or if patient has hyperthyroidism, or sometimes if patient has pheochromocytoma, वहाँ पे भी बीटा ब्लॉकर ही देना है.
देखो आई विल टेल यू द एडवांटेजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन दीज कंडीशंस. एक्चुअली ये कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, but here other diuretics and other calcium channel blockers and other drugs also maybe they may be effective, but here in these conditions the most effective and the choice drug is beta blocker. In I'm sorry, in hypertension, if any patient has elevated heart rate, beta blocker should be the drug of choice. If patient has coronary artery disease, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. Have you heard about a condition called angina? Angina? Angina. Okay, very good. What is angina? वेरी गुड. देखो, अगर कोई पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है एंड पेशेंट कम्स टू आवर हॉस्पिटल और आवर क्लिनिक, वी हैव टू टेक पेशेंट्स हिस्ट्री फर्स्ट. पेशेंट हिस्ट्री लेना है पहले. हिस्ट्री हिस्ट्री क्यों लेना है बोलो? वी हैव टू आस्क द पेशेंट कि आपका चेस्ट पेन कब कब हो रहा है. वी हैव टू आस्क व्हेन द पेशेंट्स चेस्ट पेन इज अकरिंग. एक्चुअली इन एंजिना व्हाट हैपेंस, see we have coronary artery disease. Actually coronary artery disease क्या है? Just imagine this is a coronary artery and this coronary artery is leading to the cardiac myocyte. मान लो this coronary artery is sending blood to cardiac myocyte, right? coronary artery cardiac myocytes को ही perfuse करता ना. अगर the coronary artery is blocked or it's having some plaque formation, what will happen? The blood supply will be decreased to the, will not be completely stopped, it will be decreased. Let me repeat the point. Initially when plaque formation is happened, it will decrease the perfusion to the heart, it will not completely stop. अगर completely stop हो गया तो बचता ही नहीं पेशेंट, पूरा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होकर पेशेंट will die. See, when disease, the coronary arteries will be blocked and through that the blood supply will be stopped to the cardiac myocytes. We have to ask patient's history. In this condition, see, whenever patient is at rest, कार्डियक मायोसाइट्स को उतना डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगा, कार्डियक मसल्स का डिमांड कम रहेगा. इन दैट केस, इन रेस्टिंग पोजिशन, द परफ्यूजन वॉट एवर इज कमिंग इन द हार्ट, that is sufficient actually. In that case, in resting position, patient will not have any symptom, but immediately when patient starts walking or patient is on exertion or any exercise or in any work करके टाइम पे क्या होगा? कार्डियक मायोसाइट डिमांड, the oxygen demand increases. Cardiac myocyte oxygen demand increases and what happens? The heart rate increases. When heart rate increases, more amount of blood is required for the cardiac myocyte. तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा ब्लड चाहिए अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा? हियर ऑलरेडी प्लेक फॉर्मेशन इज देयर. तो what will happen? The blood will not be sufficient to the cardiac myocyte when patient is having exertion or when patient is doing some work. In that time patient will start pain, chest pain. So अपन क्या बोलते हैं उसको in angina also we have so many types. When patient is on exertion or when patient is on working condition, patient will have pain, and when patient is sleeping or when patient is taking rest, that pain will stop. Here actually when patient is at sleep, patient resting position में और काम करते टाइम पे अगर पेशेंट को एंजिना आ रहा, I exactly don't remember the types. वहाँ पे we have stable angina and unstable angina. Yes, in stable angina किसको बोलते हैं? Resting position में कम हो जा रहा, resting position में अगर pain कम हो जा रहा, that is called stable angina. And in resting position also, if patient has pain, that is called unstable angina. That means unstable angina is dangerous. यहाँ पे resting position में भी pain आ रहा, मतलब blood supply is not that much accurate. तो देखो यहाँ पे blood, here heart rate is simply increasing, to meet the demand of the oxygen in the cardiac myocytes. So in that condition patient will be having chest pain which is called angina. So in coronary artery disease, heart rate is simply increased. Why? coronary artery disease में heart rate क्यों increase हो जाता? patient डिमांड बढ़ गया. तो ये हार्ट रेट की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से, हार्ट रेट बढ़ने के बाद पेशेंट को हाइपरटेंशन भी आ जाएगा ना. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज वी हैव टू गो विथ बीटा ब्लॉकर इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज. इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर के साथ साथ वी आल्सो हैव टू गो विथ
द प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब देखो, अपन बीटा ब्लॉकर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दे रहे. फर्स्ट इज वी आर ट्रीटिंग द कोरोनरी आर्टरी डिसीज फॉर हाइपरटेंशन एंड फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ. उसके साथ अगर कोई पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो व्हाट वी हैव टू इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट पेशेंट्स ईसीजी. पेशेंट ईसीजी चेक करना, डायग्नोस करने के लिए कार्डियक मार्कर्स चेक करना. वी कैन गो विथ 2D इको. ओके, एंड सो these are three very very important पैरामीटर्स इंटरवेंशंस वी हैव टू गो. अगर ये इसमें अगर पता चल गया कि पेशेंट को एक्जैक्टली कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, देन इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट वासोडाइलेटरी थेरेपी और नाइट, हाँ, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, एंटी प्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट्स और नाइट्रेट्स. ओके, ये सब ड्रग एंजिना के बारे में जब पढ़ते हैं अपन इन द टाइम आई टेल. बट यू हैव टू रिमेंबर बीटा ब्लॉकर्स और ड्रग ऑफ चॉइस इन कोरोनरी आर्टरी डिसीज. इसका रीजन भी आप लोग समझ गए होंगे. क्लियर. नंबर थ्री इज hyperglycemia, sorry, hyperparathyroidism. Hyperthyroidism, sorry. Hyperthyroidism के कंडीशन में भी बीटा ब्लॉकर्स और ड्रग ऑफ चॉइस. कैन एनीवन टेल व्हाई बीटा ब्लॉकर्स और ड्रग ऑफ चॉइस इन hyperthyroidism? Very good. Or any other answer? Any other answer from second years? सिंपल एक चीज याद रखो, when T3 and T4 is elevated, that is called hyperthyroidism. This is our thyroid gland. Thyroid gland will produce thyroxine. Actually, this thyroid gland will produce as T4. It will produce as T4, and when this T4 enters into the blood circulation, when it enters into the blood circulation, in the blood circulation, T4 will be converted into T3, which is called peripheral conversion of thyroxine. Peripheral conversion of thyroxine. Why it converts from T4 to T3 is because this T4 is not effective. T4 is not effective. इसकी efficacy ज़्यादा नहीं रही थी. Whereas T3 is very very effective. I mean from the both the thyroxine. This is tetraiodothyronine and this is triiodothyroxine. इसमें 3 आयोडीन्स रहते, इसमें 4 आयोडीन्स रहते. This 4 iodine T4 is not potent. It is not potent. Whereas T3 is very potent. इसकी भी action रहती, but when compared with T3 it is less. T3 is very very potent, and this T3 directly goes and increases the sympathetic activity. And when sympathetic activity increases, patient's blood pressure will increase. Okay, so here in increasing sympathetic activity, patient's heart rate increases, and through that blood pressure increases. So when beta blocker is given, particularly propranolol, when propranolol is given, propranolol will decrease the heart rate. And through that it tries to decrease the blood pressure in hyperthyroidism. And along with this, propranolol will reduce the peripheral conversion of T4 to T3. बीटा ब्लॉकर का एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? हार्ट रेट कम करने के अलावा it will decrease the conversion of T4 to T3. And here there are some anti-thyroid drugs. Can anyone tell me the anti-thyroid drugs? There is a drug called propylthiouracil, PTU. Very 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 important drug. Propylthiouracil also decreases the conversion of T4 to T3. And along with this we have carbimazole, methimazole. These are anti-thyroid drugs. Anyways, about anti-thyroid drugs we'll discuss later. Beta blockers are the drug of choice in hyperthyroidism. Why? Because in hyperthyroidism propranolol decreases peripheral conversion. यहाँ से बीपी कम होगा, हार्ट रेट भी कम होगा, पाल्पिटेशन भी कम होगा. सो इन हाइपरथायरॉयडिज्म बीटा ब्लॉकर्स और ड्रग ऑफ चॉइस. समझ गए सब लोग? बीटा ब्लॉकर के इंडिकेशंस क्या क्या है? वन इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, में हाइपरटेंशन, एलिवेटेड हार्ट रेट, or if patient has CAD, or if patient has hyperthyroidism. So ये अगर ये कोई केस, एक कोई पेशेंट को है तो our first line treatment should be बीटा ब्लॉकर. ओके, ये बीटा ब्लॉकर के बारे में आप समझ गए. नाउ आई वांट टू टेल यू दी वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
while giving beta blockers. One more very important point we have to consider. Beta blockers are strictly contraindicated in certain conditions. There are 4 conditions. ये चीज याद, ये जो है ये इंडिकेशंस है. एंड हियर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. कौन से कंडीशन में स्ट्रिक्टली नहीं देना बीटा ब्लॉकर्स, कौन से कंडीशन में देना पता चल गया, राइट? कौन से कंडीशन में नहीं देना? नंबर वन, इफ पेशेंट हैज आस्थमा. वाई बीटा